Hello everyone, this is ProfSanaAnsari, and today we are going to discuss about a very important question. And here I am making this video on the basis of my viewers' demand. So let's start here. And I would like to inform you this is the question that is fundamental rights. And in this video, friends, will be cover the meaning, will understand the meaning of fundamental rights, and also will discuss about its characteristics. And it is also, we can say, that significant importance and characteristics of fundamental rights. Now let's start here. Now first we have to know about the meaning of fundamental rights. We have already aware about the human rights, as you have know that all we have 6 human rights, and additionally our constitution has added 2 more rights in our constitution, which is nothing but called as right to basic needs and right to healthy environment. And apart from these 2 rights, previously we have 6 rights, that is nothing but called as right to hear, right to speak, right to redressal, right to constitutional remedies and all these things. So now here we just have to learn about fundamental rights. Now what is the difference between human and fundamental rights? Human rights are the rights, total 8 rights, which have already preserved, and which have already know about all the 8 rights. Now it is fundamental rights. Fundamental rights aim to पर्सनल गुड ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज दैट ऑफ द कम्युनिटी के किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल गुड को प्रिजर्व करने के लिए जो राइट्स बनाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स. और किसी भी कम्युनिटी या इंडिविजुअल के जो पर्सनल गुड की बात होती है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर उनकी सबसे जो एकदम एसेंशियल राइट्स होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, विच इंक्लूड्स देयर बेसिक राइट्स ओनली. ओके, सो नाउ फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में यहाँ पर गारंटीड किया गया था हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जस्ट बिकॉज द फंडामेंटल राइट्स वी कैन ईजिली मेंटेन और बैलेंस द पीस एंड हार्मनी in India as a citizen of India. So these includes the individual's rights, common rights, which is related to the liberalization, liberal democracies and all these things. So हमारे पास कौन कौन से rights हैं? So we have equality before law, freedom of speech and expressions, freedom of association and peaceful assembly, freedom of constitutional amenities and constitutional remedies, protection of civil rights, okay, freedom of practice any religion as per their preferences. So all these rights we have, and I have already mentioned these things whatever I have discussed you right now. So I have already mentioned all this and I have kept all details on my screen as you can see. So just take a screenshot for this and यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी है. नाउ हम डिस्कस करेंगे इसके सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. मैंने यहाँ पर सिर्फ हेड पॉइंट्स लिखा है फ्रेंड्स. अगर आप आपकी इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सो यू कैन गो थ्रू विद मनन प्रकाशन बुक सेमेस्टर 2 फाउंडेशन कोर्स. Now very first point we have, that is characteristics of fundamental rights, that is preservation of human dignity. Yes, so fundamental rights help करता है to preserve the dignity of the human being, ठीक है. नाउ हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसको फॉलो करती है? डेमोक्रेसी को. अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी द पब्लिक हैव अ राइट्स टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट फॉर देम. समझ में आ रहा है? मतलब डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका इट इज़ नथिंग बट अ सिस्टम वर द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल. आपने सुना होगा बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, है ना. सो दिस इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक इंडिया. हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं. हमको अगर कोई गवर्नमेंट लाना है, किसी कैंडिडेट को भी लाना है, सो हम वोटिंग को यूज़ करते हैं. इलेक्टेड बाय द पीपल मतलब वोटिंग. सो यहाँ पर वोट करना या इलेक्ट करना किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी कैंडिडेट को, यह आपका हक है, ये आपके राइट्स है, और यहाँ पर आपकी ह्यूमन डिग्निटी प्रिजर्व होती है. सो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है preservation of human dignity. Now the next one we have enforcement of rights. Enforcement का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रूल में आना, ठीक है. So enforcement of rights मतलब हम all the people irrespective of their caste, creed, religion, their gender, their place of birth, everyone has a right to move to the Supreme Court or High Court in case of any violations, or they can move to the Supreme Court or High Court for ask or for to seek their for ask their whatever we can say, उनकी जो भी queries है उसके लिए they can move, ठीक है. They can ask for justice. So this is nothing but the enforcement of rights. So fundamental rights है कि रूल हर किसी के लिए है.
एक्सेप्ट यहाँ पर कोई ये नहीं बोल सकता कि इसके लिए एक्सेप्शंस है, इसके लिए एक्सेप्शंस है. नो, नो एक्सेप्शन. इट इज़ irrespective. It is for all the people, irrespective of the caste, creed and religion. Now the next one we have protection against violations of human rights. नाउ अगर ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहा है, वायलेशन मतलब जो हमारे हक है, जो हमारे राइट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ एंड जो बेगर्स सिस्टम आप देखते आ रहे हो, है ना, या फिर चाइल्ड लेबर आप देखते आ रहे हो. चाइल्ड एक एज अ चाइल्ड ही और शी हैज़ अ राइट टू टेक हर primary and elementary education, but except taking primary and elementary education they are doing beggars work and they are doing laborship on the any छोटी मोटी जो भी shops होती है या फिर किसी industries and factories में. So it is it should be punishable. It will be punishable by our government side, because we have to be we are supposed to be ignore all these things. We have to just respect to each and every child. जो भी है उनको child abuse नहीं होना चाहिए, child labor नहीं होना चाहिए, उनके साथ biasness नहीं होनी चाहिए, communal violence नहीं होना चाहिए. मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस को प्रोटेक्शन देता है हमारा फंडामेंटल राइट्स. इसी के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी फाइल की जा सकती है, ठीक है. मतलब he or she can move to the Supreme Court, High Court or a Consumer Court, and they can file the public interest litigations also, PIL, which is called, ठीक है. Next one is applicability. Yes, the rights are applicably universally applicable. हर किसी के लिए applicabilities है, हर किसी के लिए applicable है. Liberty है, they can use and they can enjoy their rights. Next, enforceable against individual. If the individual person, if anyone, they are doing a wrong action, they are going as against are the human rights and the common human rights. So in case of all these things, the rights जो है अगेंस्ट किसी कोई इंडिविजुअल इसके अगेंस्ट जा रहा है राइट्स के, सो इट कैन बी पनिशेबल बाय अ लॉ. नेक्स्ट, अमेंडमेंट टू राइट्स. अमेंडमेंट्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज चेंजेस. अगर कोई राइट्स है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस ने बना रखे हैं, जैसे तो फंडामेंटल राइट्स बनाया, इसके अलावा जो हमने अभी डिस्कस किया, इसके अलावा भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स वी हैव, ठीक है. वी हैव ओनली 8 ह्यूमन राइट्स, बट फंडामेंटल राइट्स वी हैव लॉट ऑफ, ठीक है. सो इन केस ऑफ एनी राइट्स अमेंडमेंट वी कैन डू अमेंडमेंट्स ऑल्सो. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स दैट वी कैन डू अमेंडमेंट एंड चेंजेस इन द राइट्स. इन केस ऑफ एनी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम, देन नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ राइट्स. अगर कोई राइट्स है किसी एक के फेवर में और दूसरे के फेवर में नहीं है, दूसरे के लिए अनफेवरेबल है, सो दोज राइट्स कैन बी सस्पेंड. नाउ द लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स. येस, द फंडामेंटल राइट्स आर क्लासिफाइड अंडर द ह्यूमन राइट्स, विच इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज, एंड इट इज़ क्लासिफाइड इनटू द 6 groups, which is nothing but called as right to equality, right to freedom, right to against the exploitation, right to freedom of religion, practicing any religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Constitutional remedies are nothing but that he or she can move to the Supreme Court, High Court and the Consumer Court. Okay friends, so we have completed this topic here, and I have already uploaded the video on the right to equality, and in जिसमें मैंने deeply discuss किया about right to equality. So if you want to watch more, so please do like and subscribe to my YouTube channel. That's all enough for today. Keep supporting, keep watching, and thank you for watching. Bye bye.